हाय स्टूडेंट्स छुआ मैंने सब भलरे थी। तो आज +2 सेकेंड ईयर CHSC एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फिजिक्स परीक्षा होता फॉर द स्टूडेंट रजिस्टर्ड अप टू 2023। आम से परीक्षा 70 मार्क क्वेश्चन आसाला जो क्वेश्चन ने 20टा MCQ थिला से MCQ क्वेश्चंस आम आंसर गुड़ा डिस्कसन करवा। एथर किसी प्रोब्लेम्स अच्छी थियोरेटिकल क्वेश्चंस वरिका भी अच्छी और से क्वेश्चन आंसर मु मार्क कर दूची जो क्वेश्चन ने जार डाउट्स रहिबो बा को प्रोब्लेम जदि किए सॉल्व न करि परिबो मते कमेंट्स रे जणैबो मु तार पुणी वीडियो करिक प्रोब्लेम सॉल्व करिक तार सॉल्यूशन वीडियोस वरिका भी छाड़ देबी। बुझेला प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन वीडियो छाड़ देबी। तो एबे आमे गोटे गोटे आंसर डिस्कशन करदबा आगु को MCQ घरिकार समस्ते देखी नेबे चेक कर नेबे। एटा सेट ए रो और करेस्पोंडिंग सेट रे जो गुडा सब आंसर थिबो दया करी चेक कर नबो तमर से क्वेश्चन ना आंसर ठीक अछि ना ना। जदि किछि प्रॉब्लम हुए मते कमेंट्स रे जणेबो। धन्यवाद। तो सेक्शन ए बा ग्रुप ए बा क विभाग से आमर MCQ क्वेश्चन आसला। क्वेश्चन हिंदी ओडिया इंग्लिश बाई लैंग्वेज रे आसीबो दीटा लैंग्वेज रे आसीबो दीटा लैंग्वेज रे आसी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 टा होची तमर MCQ 20टा क्वेश्चन। तो फटाफट डिस्कशन करनबा। क्वेश्चन नंबर 1 ए द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्जेस इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ होची स्टैटिक चार्ज भीतर फोर्स है कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पॉइंट चार्जेस माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q टू कैपिटल Q आर प्लेस्ड one at each corner of a square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of the square is 0, that is capital Q is equals to minus Q. And question number C, when two identical capacitors are in series, they have 3 microfarad resultant capacitance, and when parallel 12 microfarad, what is the capacitance of each? That is answer is 6 microfarad, option 1, option I. Next D, a thick wire is stretched so that its length becomes 2 times what is the ratio of change in resistance of the wire to the initial resistance? That is option 3, that is 3:1. Then question number E, calculate the amount of charge flowing in 2 minutes in a wire of resistance 10 ohm when a potential difference of 20 volt is applied between its ends. Answer is 240 coulomb. Okay, option 2, 240 coulomb. Then 3 resistances 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in parallel. The ratio of current passing through them when a potential difference is applied across its ends will be, answer option I, 6:4:3. Next, 4 resistances of 100 ohm each are connected in the form of a square. Then the effective resistance between any two diagonally opposite points is option, that is 300 ohm. Next H, due to 10 amperes of current flowing in a circular coil of 10 centimeter radius, the magnetic field produced at its center is 3.14 10 to the power minus 3 Weber per meter square. The number of turns in the coil will be 50, option 3. Next question number I, 2 wires of same length are shaped into square and a circle. If they carry the same current, the ratio of the magnetic moments, option 3, that is pi/4. Next, the self inductance of a coil 5 Henry. A current of 1 ampere changes to 2 ampere within 5 seconds through the coil. The value of induced EMF, that is 1 volt. Option 3 is the answer.
The power delivered by the AC source of the circuit becomes maximum when omega L is equals to 1 by omega C by inductive reactance is equals to capacitive reactance. Option 2. Next, the average power dissipated in a pure inductive circuit by pure inductor, that is option 2, that is 0. Next question, M, the magnifying power of a telescope is 9. When it is adjusted for parallel rays, the distance between the objective and eyepiece is 20 centimeter. The focal lengths of the lenses are 18 centimeter, 2 centimeter, option 3. Next, if the refractive index of the material of equilateral prism is root 3, then the angle of minimum deviation is 60 degree, option 3. In a young double slit experiment, the distance between the slits is reduced to half and the distance between the slit and the screen is doubled, then the fringe width will become 4 times. Option 4 is the answer. Next, P, question number P, and the de Broglie wavelength lambda and the kinetic energy E of an electron are given by the relation lambda is equals to h by square root of 2me, that is option I. The momentum of the photon of energy h nu is simply option 2, option I, double I, that is h nu by c. Next, question number R, the number of photoelectrons emitted per second from a metal surface increases when the intensity of the incident light increases. Next, the question number S, the spectral series of hydrogen atom lies in the visible region of the electromagnetic spectrum is Balmer series. And last one, the function of rectifier is to convert AC to DC, that is option I. ये सब थिला 20टा एमसीक्यू रा आंसर गुड़िक एटा सेट ए टा सेट बी रे खाली क्वेश्चन टा सफल हेतिबो सेट बी और सेट सी रे दयाकरी क्वेश्चन अनुसार आंसर मैच करदब जोटी तार डाउट थिबो मते जणैबो एवं आम कमेंट रे मेंशन कर देले क्वेश्चन नंबर मु तार सॉल्यूशन करिकी वीडियोस रे पुणी छाड़ीबी एमती कनेक्टेड रुह फिजिक्स चैम्बर सहित फर्दर वीडियोस पाई कि सब्सक्राइब रख चैनल को। धन्यवाद।